अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी से गए होंगे और आपका कल का जो पेपर है आपने अच्छी उसकी तैयारी कर ली होगी। अच्छा तो गेस्ट पेपर का बेसिकली आपके साथ शेयर करने का तरीका कार हमारा जो है ये कुछ यूँ होता है कि ताकि आपको इससे कुछ आइडिया मिले। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमने गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किए हैं तो आप सिर्फ वही लर्न करें, सिर्फ वही करके जाएं पेपर में। तो आपको एक्स्ट्रा भी करना चाहिए। ठीक है, तो 10-12 चैप्टर की बुक होती है, तो आप अगर सिर्फ इन पे ही गुजारा करेंगे कोई बात नहीं, वो तो चलो 70-60-70% 80% मार्क्स आ जाएंगे। तो कुछ ऐसे हो सकता है कि अगर आपको कुछ ऐसे सवालात आ जाएं जो आपके इस टेस्ट पेपर में नहीं थे, ठीक है, मगर उनके किए बगैर भी आपका गुजारा हो रहा है, मगर वो क्वेश्चन आपको भूल जाए। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको भूल जाए, कुल मैंने गेस्ट पेपर में तो पढ़ा था मगर अब मुझे याद नहीं आ रहा, तो फिर अगर आपको भूल जाए तो आपको गेस्ट पेपर वाले भी ना आएंगे और जो आपने छोड़े वो भी ना आएंगे, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। आपने अपनी फुल तैयारी करनी है। तो अब मैं आपके साथ शुरू करता हूँ गेस्ट पेपर शेयर करना। बाब नंबर 9, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें सबसे पहले मुख्तसर जवाबी सवालात यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिस्ट्री, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड, व्हाई इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। इंशाल्लाह सवालात। राइट डाउन द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन, describe the characteristics of reversible and irreversible reaction, give examples, write down the macroscopic characteristics of forward and reverse reaction, describe equilibrium constant and its unit। बाब नंबर 10, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। इसमें सबसे पहले मुख्तलिफ सवालात। डिफाइन अ बेस एंड एक्सप्लेन दैट ऑल अल्कलीज आर बेस्ड बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। Define Bronsted-Lowry base and explain with an example that water is a Bronsted-Lowry base. What kind of bond is formed between Lewis acid and a base? Why hydrogen plus ion act as a Lewis acid? Name two acids which is manufacturers of fertilizers. Define pH. What is the pH of pure water? Sodium sulfate is a natural salt while sodium bisulfate is an acid salt. Justify. Give a few characteristics properties of salts. What are the insoluble salts prepared? Name an acid used in preservation of food. How can you justify that lead hydroxide nitrate is a basic salt? What salt is used to prepare plaster of Paris? Define hyperacidity. When and what discovered by Sir Humphrey Davy? Water is an amphoteric compound. Justify. Name any two mineral acids and give their formula. Describe the limitations of Arrhenius concept. How conjugate acid and conjugate base are formed. What is meant by neutralization. Give two uses of nitric acid. What is an indicator? Give two examples. What are salts? Give formula of any one salt. Which salt is used for making plaster of Paris? Define double salt. What is meant by water of crystallization? What are acidic and basic radicals? Give one reaction of acid with metal. इंशाल्लाह सवालात। Explain the Lewis concept of acid and bases. Give 5 chemical properties of acids. What are conjugate acids and base? Explain with examples. Describe the reactions of acids with metals. Give the uses of sulfuric acid, nitric acid and benzoic acid. What are indicator? Explains. Write note on basic salts and double salts. Numericals हैं इस चैप्टर में भी। Calculate the pH of 0.1 molar KOH. Calculate the pOH of 0.004 molar 0.004 molar HNO3. What is meant by the term catenation? Give an example of compound that displays catenation. How is coal formed?
What is the importance of natural gas? How are alkyl radicals formed? Explain with examples. Explain different radicals of butane. Define functional group with an example. What is ester group? Write down the formula of ethyl acetate. Compare the homocyclic and heterocyclic compound. Define homologous series. What are heterocyclic compounds? Give two examples. What is vital force theory? Define molecular formula. Give an example. What is condensed formula? Give an example. What is meant by catenation? What is destructive distillation of coal? ये इन 6 सवाल शुरू हो गए हैं. What are alkyl radicals? Write down the radicals of propane and butane. Write tests for unsaturation of functional group. भाव नंबर 12 हाइड्रोकार्बन. Define between differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbon. Why are the alkanes called paraffin? What do you know about hydrogenation of alkenes? Why are alkanes used as a fuel? Why are the alkenes called olefins? Write the molecular dot and cross structural formula of ethane. What are alkanes called olefins? How hydrogenation of ghee is carried out? Give chemical equation. Give two uses of acetylene. Define hydrocarbons. Write down 5 physical properties of alkenes. Give uses of ethylene. Give 5 physical properties of alkenes. मुख्तलिफ सवाल आता है. बाब नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री. How plants synthesize carbohydrates? What is the difference between glucose and fructose? What are the proteins found? How is gelatin obtained? Give the general formula of lipids. Name 3 fatty acids with their formula. Give the types of vitamins. What do you mean by genetic code of life? What is the function of DNA? Define biochemistry. Define polysaccharides. Give an example. How energy is obtained from carbohydrates? Explain peptide linkage. Define peptide and give their general formula. What are fatty acids? Give an example. Differentiate between oil and ghee. Give the source of vitamin A. How is margarine prepared? Explain oligosaccharides. ये इंशाल्लाह सवाल शुरू हो गए हैं. Explain oligosaccharides. Explain the sources and the uses of lipids. Write down the sources and uses of carbohydrates. What is meant by vitamin? Explain its types in detail. Sorry. Bar number 14 atmosphere. Explain the phenomena of decreasing temperature in the troposphere. Differentiate between primary and secondary air pollution. State the major sources of carbon monoxide and carbon dioxide emission. How does acid rain increase the acidity of soil? Differentiate between atmosphere and environment. Define global warming. Give 2 effects of global warming. How acid rain is formed. Define pollutant and contaminant. Again, 6 सवाल. Why is carbon monoxide considered a health hazard? Explain greenhouse effect and global warming. Write a note on troposphere. बाब नंबर 15 है पानी यानी कि वाटर पे. मुख्तलिफ जवाबी सवाल. हाउ वाटर राइज इन प्लांट्स. विच फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजोल्विंग पोलर सब्सटेंस इन वाटर. वाई आर नॉन पोलर कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर. Differentiate between soft and hard water. What are the effects of temporary hardness in water? Mention the disadvantages of detergent. What are the reasons of waterborne disease? Give 2 properties of water. Give 2 disadvantages of hard water. What do you mean by boiler scale? How are they removed? Define scum. Name types of water hardness. Define leaching process. Define chlorination. What are industrial effluents?
Give two bad effects of industrial effluents. What is fluorosis? What is meant by dysentery? Give the cause of cholera. इंशाया सवालात. Give some disadvantages of hard water. Explain domestic effluents. Describe the reasons of water water hardness. Bab number 16, chemical industries. What role is played by the pine oil in the fourth flotation process? Name the various metallurgical operations. What are the advantages of solvase process? What is the principle of solvase process? Describe the formation of petroleum. What is the difference between crude oil and residual oil? Minerals. What is meant by electromagnetic separation? How ammonical brine is prepared? What is the principle of solvase process? अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसमें हाउ अमोनिकल ब्राइन इज प्रिपेयर्ड, एक सिंपल सवाल यहाँ पे ये भी आ जाता है, व्हाट इज ब्राइन सोल्यूशन। जो ब्राइन सोल्यूशन होता है वो सिंपल सोल्यूशन होता है साल्ट का, NaCl, सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है उसको हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, वो हम चार्ज की मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस? व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? व्हाट इज गैसोलीन? गिव इट्स यूजेस। डिफाइन फंक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इंशाया सवालात. How crude oil is refined? Explain two important fractions of petroleum along with their usage. Describe the methods of ore concentration. Describe different steps of urea preparation. Give the uses of petroleum, ether and gasoline. Give the uses of diesel oil and fuel oil. तो दोस्तों ये हैं अहम सवाल हर चैप्टर के गेस्ट पेपर के तौर पे आपके साथ मैंने ये शेयर कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी और ये गेस्ट पेपर को भी आप एक नज़र ज़रूर देख लेना। इंशाल्लाह आपका पेपर 100% होगा। तो कल के पेपर के लिए, केमिस्ट्री के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।